flowers, sweets, and devotional music. The festive atmosphere at the Dev Mandir temple today has all the usual colorful ingredients of Janmashtami, a popular religious festival celebrated widely across India to mark the birth of the Hindu god Krishna. But one key thing sets these celebrations apart. They're taking place not in India, but in Bangkok, at the premises of the Hindu Samaj, one of the oldest Indian immigrant community associations in Thailand. हमारे हिंदू समाज का इतिहास लगभग 70 साल पुराना है और जब हमारे बुज़ुर्ग भारत से आए थे तो उन्होंने सोचा कि एक स्थान को बनाया जाए जिधर बैठ कर के वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे उन्होंने हमारे बुज़ुर्गों ने इस चीज़ का निर्माण किया, एक नाम दिया हिंदू समाज। जैसे जैसे भारतीयों की संख्या बढ़ती गई धीरे धीरे हमने ज़मीन ली और फिर पक्की इमारत बनाई जो आजकल वर्तमान हमारा हिंदू समाज है। इसका उद्घाटन आज से लगभग 40 साल पहले हमारे थाई देश के महाराजा जी और महारानी जी के शुभ हाथों से हुआ था। इस मंदिर के निर्माण के लिए भी बड़ा भारी प्रयास हुआ। ये उन दिनों की बात है जब यातायात के साधन उतने सुगम नहीं थे। ऐसे में मंदिर निर्माण और वो भी इतना विराट विशाल मंदिर बनाना अपने आप में एक दुरूह कार्य था। न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया, न जाने कितनों ने अपने व्यापार की तरफ ही ध्यान नहीं दिया और इस तरह एक बहुत बड़े त्याग और बलिदान की नींव पर श्री देव मंदिर बन करके तैयार हुआ। Like other Indian religious places of worship in Bangkok, the Dev Mandir acts as a meeting point for members of the North Indian Hindu community who live in the city, especially on occasions like this when everyone gathers to attend a special Janmashtami evening function organized by the Hindu Samaj. ये जो है त्योहार है इसीलिए होता है कि सबके मिलने का टाइम होता है और यहाँ पर कभी कितने टाइम गुजर जाते हैं हम एक दूसरे से नहीं मिलते, पर इधर आके हम सब लोग मिल जाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। यहाँ जो है बहुत सुंदर ढंग से कार्यक्रम किए जाते हैं। कम से कम 3-4 हज़ार लोग तो होते ही हैं जन्माष्टमी में और काफ़ी धूमधाम के साथ इस देव मंदिर में ये कार्यक्रम होता है। सभी जो है बढ़ चढ़ कर जो है इस पूरा साथ देते हैं और सब भारतवासी जो हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे पंजाब से हैं, किसी प्रांत से भी हैं, सबकी श्रद्धा यहाँ पर देखने को मिलती है। कैसे कैसे सब लोग मिलकर जो हैं एकजुट होकर एक श्रद्धा के साथ प्रभु का जहाँ जन्माष्टमी मनाते हैं। It isn't just Hindus who come to participate in the festivities though. सिख लोग भी आते हैं क्योंकि यहाँ हम लोग ऐसे हैं इकट्ठे ही रहते हैं। सिख लोग हम जान पहचान के होते हैं, यार दोस्त होते हैं और इधर में ये नहीं है कि तुम सिख हो हम हिंदू हैं। हम अक्सर एक दूसरे के मतलब गुरुद्वारे में भी चले जाते हैं और सिख लोग जो हमारे इधर में भी आ जाते हैं। What is especially notable is the enthusiastic participation of many Thais who have great devotion to several Hindu gods and goddesses. ये 10-15 साल के अंदर जो है थाई लोगों में इतनी श्रद्धा बढ़ी है। हम लोग खुद देखते हैं कि कैसे ये सब इतनी श्रद्धा से प्रभु के दरबार में आते हैं और अपनी आंखें बंद करके समाधि जो है घंटों घंटों बैठते हैं और हम लोग ही देखकर जो है इतना खुश होते हैं कि हम जहाँ भी रहते हैं उस देश के लोग जो हैं हमारे धर्म की इतनी इज्जत करते हैं। ดิฉันนับถือพระพุทธเจ้า
ทุกศาสนาทำให้เราเป็นคนดีนะคะ และเราก็ขึ้นมาบนนี้เราก็คิดว่าทุกศาสนาองค์ปู่พิฆเนศมหาเทพทุกพระองค์ ก็มีสิ่งที่ทำให้เราดีขึ้นเหมือนกันทุกศาสนาทำให้เราเป็นคนดี The Thai fascination with India goes back thousands of years and reflects in the many elements of Hinduism that have become an integral part of Thai cultural tradition. देवी देवताओं का पहले तो यहाँ प्रचार था ही, बाद में एकदम ख़त्म सा हो गया था। पीछे ब्रह्मा जी की स्थापना जगह जगह यहाँ शुरू हुई। एरवान होटल के सामने ब्रह्मा जी हैं और इतने जागृत वो ब्रह्मा हुए कि देश विदेश से ग्रुप बनाकर 100-100, 200-200 आदमियों के लोग दर्शन करने आते हैं और उस जैसा से अपनी मनोकामना की पूर्ति पाते हैं। उसी की देखा देखी लोगों की श्रद्धा बढ़ी और हर बिल्डिंग, बड़े बिल्डिंग के सामने ब्रह्मा की मूर्ति लोगों ने स्थापित करनी शुरू कर दी। बाद में फिर शंकर की मूर्ति भी कहीं रखी गई और अब गणेश जी का इतना ज़्यादा प्रचार हुआ है कि लगभग घर घर में छोटी या बड़ी गणेश की मूर्ति पहुंच गई हैं और बहुत जगह पर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बनी हैं। The cultural exchange works both ways, like with this portrait of the Queen of Thailand being honored with flowers by visitors to the temple. It is equally heartwarming to see a Buddha statue given pride of place amidst the pantheon of Hindu gods and goddesses adorning the temple's altar. जैसा कि आप देख रहे हैं देव मंदिर में अन्य हमारे भारतीय देवी देवताओं के अलावा बुद्ध भगवान भी विराजमान हैं, तो देख करके थोड़ा सा आश्चर्य होता है। लेकिन पहली बात तो है कि जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश ने हमें सब कुछ दिया है, उस देश के प्रधान देवता को भी देवता की तरह हम लोग मान्यता देते हुए यहाँ स्थापित कर रहे हैं। दूसरा एक कारण है कि भगवान विष्णु ही बुद्धावतार के रूप में प्रकट हुए, ऐसी पौराणिक मान्यता है। इसलिए बुद्ध हमारे नारायण स्वरूप ही हैं, इसलिए भी हम उनको नारायण का दर्जा देते हुए स्थापित किए हुए हैं। For the younger members of the Indian community, many of whom have been born in Thailand, a festival like this provides a chance to experience the richness of their Indian roots. हम तो पीछे से इंडिया से आए हैं, चाहे हमारा जन्म इधर ही हुआ है, लेकिन हम तो इंडियन ही हैं और इसीलिए हमारे जो आगे बच्चे हैं उन लोगों को ये सभ्यता सिखाना चाहिए, मतलब कि हम इंडियन हैं, हमारा रहन सहन कैसा होता है, हमारा रीति रिवाज क्या होता है, और ये हम अगर बच्चे में डालेंगे तो तभी बच्चे फॉलो कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। नहीं तो कई ऐसे भी होते हैं कि वो पूरे थाई हो जाते हैं यहाँ इंडियन के बच्चे, लेकिन हमारी लोगों की यही कोशिश होती है कि मतलब बच्चे हमारे सीखें कुछ और कल्चर अपना, ट्रेडिशन अपना, ताकि ये चालू होता रहे काम। I feel glad that I've performed such a nice dance as a role of Radha Ji, and also dance on the song of Lagan of Radha Ji. So I felt proud that I'm doing something for my own culture and religion. The celebrations climax at midnight, with the mixed Indian and Thai audience watching mesmerized as the birth of Krishna is dramatically recreated.
As the crowd fervently invokes the name of the baby god, devotees line up to seek his blessings, a ritual that makes them feel connected, even in faraway Thailand, to the land they have left behind. इस तरह के त्यौहार जब भारतीय लोग बाहर मनाते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होता है, जो प्यार है, वो हमें भारत से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि इतना भारत में जो है हम लोग इतना अपने धर्म से शायद नहीं जुड़ पाते, लेकिन जितना हम बाहर रहकर जो है अपने भारत की हमें याद आती है और हम अपने धर्म को ज़्यादा ठीक ढंग से निभा पा रहे हैं। It is festival time once again in the village of Latha. A time every year when this little mountain community gathers at its ancient local shrine to pay homage to its patron deity, the goddess Nanda Devi. Some miles to the north towers the magnificent Himalayan peak, whom the villagers worship as the personification of the goddess. ये हमारे पहाड़ नंदा देवी को पहाड़ से नंदा देवी तो हमारे गाँव को देवता है कि दुनिया को सब तुम्हारे को देवता है, हमारे सबको देवता है। तो हम देख बहुत अच्छा माने बार का पहले ये तो देवता गाना विध बोयो तो देवता गाना कोई दुख बीमार बोयो पर अब जिंदगी में कुछ बचे पर अमन तो एक माने तो कौन As the rituals gather momentum, the temple priest is seemingly possessed by the spirit of the goddess, who bestows favors on her faithful devotees. By tradition, a sheep is sacrificed to propitiate the goddess and seek her blessings. The cult of Nanda Devi extends far beyond Latha's borders and forms an integral part of the culture of the Garhwal. The Garhwal region is tied with the psychology of the vast majority of the Indian population, and the backbone of this cultural landscape is the Ganga River. In the Indian context, many of these rivers are revered, and Ganga occupies the highest level of reverence that we attribute to the river systems in the country. There is a belief among a large section of the society that unless you visit the Garhwal Himalaya and go to the region from where the Ganga originates, you are not likely to attain salvation. And therefore, all along the Ganga river, you have got a large number of temples and religious places of worship because of the sacredness that is attached with the river.
It is late afternoon on the Mekong River in Cambodia. In Daum Rokar commune, Keone is busy ploughing his paddy fields. When the rains come, his land will be naturally irrigated by the river waters, providing his household with a stock of rice to last the entire year. Down near the riverbank, Keone's wife, Nan Pha, is busy feeding the family cattle. Their fodder too comes from the vegetation floating on the river surface. Out on the river, Van Na and his wife Sopon are hoping for a good catch of fish today. A little down the shore, Jantu is collecting shells from the river sand, which will make a tasty meal for the family dinner. Like millions who live along the Mekong, the lives of Daum Rokar's villagers depend a great deal upon the river's bounty. ទឹកទន្លេនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដើមលកានឹងបានល្អក្នុងឆ្នាំនេះមកល្អហើយមធ្យមបានត្រឹមហិកតានឹងបានត្រឹម5 6តោនបាទផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចរស់នៅបានចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នឹងនៅភូមិដើមលកាយើងខ្ញុំនឹងអាចរស់នៅបានសុខបាន Over generations, people have learnt to adapt their lives to the river's ever-changing moods and rhythms, including the annual phenomenon of flooding. ខ្ញុំសគួរជាបើសម្រាប់គោក្របីដែលទឹកលិចមកហ្នឹងអត់គោអត់មានស្មៅស៊ីទេអញ្ចឹងបានមានចំបើងអញ្ចឹងខែនេះខែទំនេរហ្នឹងគឺខ្ញុំខំទឹកជញ្ជូនច្បើងដាក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគោក្របីស៊ីនៅរដូវទឹកចំនួនមកហ្នឹង Contrary to popular belief, floods bring many benefits to the people of the Mekong. Lũ là một nguồn tài nguyên về nước ngọt. Lũ mỗi năm về đồng bằng thì mang theo phù sa về bồi đắp cho đồng bằng. Và ngoài ra thì mang cái nguồn phù du rồi tôm cá, thủy sản dồi dào về cho các cái con sông trên đồng bằng. Cũng như là làm cho cái môi trường sinh thái ở hai bên bờ sông được cải thiện và thay chua rửa mặn ở đồng bằng, làm cho việc sản xuất đạt được hiệu quả sau mỗi mùa lũ tốt hơn. But excessive flooding can sometimes lead to great hardship and devastation, as happened in the year 2000. Ởចំពោះបញ្ហាទឹកដែលឡើងនៅឆ្នាំ2002នេះប្រជាពលរដ្ឋ 80% និងតាត់ពីអាណត្តិដែលចំនួនមកនៅទីទួលសុវត្ថិភាពនេះចំនួន 20% ហើយផ្ទៃដីបង្កមកខាត់ផលទាំងស្រូវប្រាំងស្រូវប្រាសាពិសេសដំណាំអនុផលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើនោះគឺលិចប្រហែលជា 70% ប៉ុណ្ណេះចំពោះបញ្ហាទឹកចំនួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានមកចំនួនមកនៅទីទួលសុវត្ថិភាពនេះវាខ្វះអនាម័យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំងឺរាករូស The huge human, social and economic loss from the 2000 floods made governments across the region realise that relying on traditional response measures was just not enough. A more systematic and transnational approach to tackling the Mekong's floods was needed. The institution entrusted with this task was the Mekong River Commission, a transnational body set up by the countries of the Mekong region to jointly manage their shared water resources. Following a series of consultations between partners, stakeholders and technical experts, the Flood Management and Mitigation Programme, or the FMMP, was initiated by the MRC in 2004. The programme has 5 main components. Setting up of a flood management mitigation centre, structural measures and floodproofing,
enhancing cooperation in addressing transboundary flood issues, flood emergency management strengthening, and land management. Through this integrated approach, the FMMP aims to minimise the hardship and loss caused by floods and to harness them as a positive force in the development of the Mekong's communities. These legs once raced across the fields of India, battling to win glory in countless fiercely fought hockey games. But for the past 25 years, these same legs have been fighting another kind of battle against one of the world's most debilitating diseases: arthritis. Jacqueline Colasso, former hockey champion and successful banker, was severely affected by rheumatoid arthritis at the age of 37. When arthritis hit me, one of the thoughts that struck me was, what on earth has happened to these legs which used to race down the tracks of Kantirwa Stadium in Bangalore or the hockey fields of India. And I remember when recovering from my knee surgery, seeing the long cut over my knee, almost 9 inches, and looking at Dr. Chandy and bursting into tears and saying, "Dr. Chandy, what on earth have you done to this knee? This was the knee of a sports woman." And I was so upset. And he just looked at me and he said, "Well, what to do, Jackie, you know." And then that made me realize that, well, it's ironical, but I better accept it and get on with life. And I think from that day onwards, I decided, well, I may not be able to race down the tracks again, but I can be sporting about it, and I can be a sporting arthritic. I was expecting much more an old or traditional way of dancing, and I was really surprised by what I found, because it was much more an outdoor party than a serious traditional dance that I expected. ที่ปราบปลื้มของพี่น้องชาวตำบลเจ็ดเสมียนนะครับที่ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับการเสด็จมาเป็น There was an empty space across the road of where the market took place, and people marked a space by only using a rope to mark a field in which action could take place. And within this marked space there was a band, and in front of the band a row of chairs on which maybe 15 older women were sitting. And these women were maybe all in between the age of 45 and 65, or maybe even older, all rather heavily made up and all wearing the same costume. ครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้นำเสนอให้กับบรรดาขาโจขาระวงที่ For me it was especially interesting because I thought it's very much connected to many theatrical aspects, and I immediately, when I arrived, thought that actually one could take this situation as it was and export it to any place in Europe, and probably every theatre would be willing to present it as a ready-made performance.คุกคลักขออภัยว่า ส
Sacred groves also occupy an important place in Kerala's colourful folk art heritage with the annual rituals of the Kava gods and goddesses. Perhaps the most spectacular of these rituals is the Theyyam, or the dance of the gods, which is performed once a year in the Kavas of the Malabar. As the dancer gyrates to the hypnotic rhythm of the drummers, he is possessed by the spirit of the patron deity. One by one, devotees line up to seek the Theyyam's blessings, while he in turn exhorts them to preserve the sanctity of the sacred grove. With the approach of nightfall in Kungani Kava, it is time for the spectacular Kungani Bhagavati to enact the grand fire Theyyam. And as the glorious spectacle unfolds before our eyes, yet again one is filled with a feeling of wonder. At the richness of the sacred grove legacy that continues to live on in so many different parts of India. A legacy that has so much to offer to the modern world. Looking at the Maharashtrian village of Ralegan Siddhi today, it is hard to believe that it was once chronically prone to drought. The ripening fields of jawar that stretch in all directions are clear signs of a thriving agricultural economy. And yet the villagers still recollect a time not so long ago when things were very different. पूर्वी फार अगदी सगळं रान उघाड होतं, झाडं तोडली होती, लोकांची दुर्बलता होती. दुर्बलता म्हणजे अति लोकांच्या तारामळे होत्या. धान्य नसं पिकत, 8 महिन्याचं धान्य पिकत होतं. आणि महिन्याचे सावकार लोक इथं पैसे उगवायला यायचे, पैसे उगवून घेऊन जायचे. त्यांचं नाव आमुष्यापण ठेवलं होतं. It was in these circumstances that a local villager called Kishan Baburao Hazare returned to settle in Ralegan Siddhi after a stint as a driver in the Indian Army. He was strongly affected by the plight of the village and resolved to do something about it. गावची जी परिस्थिती होती ती परिस्थिती दुष्काळी भाग 15-16 इंच पाऊस पडतो आणि जो काही पडतो तोही वाहून जात होता. म्हणून 15 ते 20% लोक एक टायमाला जेवण करून दुसऱ्या टायमाला उपाशीपोटी झोपत होते. 55% लोक बाहेरचं धान्य घेऊन खात होते. The challenge was to find some way to solve the perennial water crisis that plagued the village. Hazare did not start with anything very ambitious. The first project he undertook was merely to rectify the technical defects in an existing percolation tank which had been built in the village under the government's watershed development program. Once this had been successfully accomplished, a series of small water harvesting structures were then constructed in stages on the hills surrounding the village to trap rainfall and recharge the groundwater table. गामारा डुंगरा सोना रे भाया, गामाना डुंगरा सोना रे लो, गामाना डुंगरा सोना रे भाया, गामाना डुंगरा सोना रे लो, टुकड़ा लगाओ हरियाली पाओ, धरती नो सिंगार करो रे लो.
इथे एक गाव होते, माणसे इथे राहत होती, रंक होते राव होते, सुख दुख पाहत होती। एक पहाट आसी आली, सार सार पुसून नेली। एक पहाट आसी आली, सार सार पुसून नेली। हर बाल वैज्ञानिक का एक सपना होता है दिसंबर में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना। शुरुआती समारोह खत्म होते ही अब समय है कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य का, प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण। भाग लेने वालों की बड़ी तादाद के कारण पेश करने का तरीका सरल रखा गया है। या 4 ठिकाणी गणपती विसर्जन सर्वात जास्त प्रमाणात होतं। कुछ मिनट प्रोजेक्ट पेश करने के और फिर कुछ सवाल जवाब, जिससे ये साबित हो सके कि छात्र ने कितनी गहराई से विषय को समझा है। So much more is needed. Yeah, so much more is needed for the plant growth, for the particular plant. निर्णायकों का एक दल हर प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करता है, मगर यहाँ अपनाया गया तरीका उन आम परीक्षाओं से काफी अलग है, जिनमें छात्रों को वरीयता के आधार पर आंका जाता है। बच्चे को बताया जाता है कि देखिए आपने अपने लिए ये गोल जो है वो रखा था और उसको अचीव करने के लिए आपने ये किया, यदि आप ऐसा करते तो शायद आप बहुत अच्छा कर पाते, और ये आपने कमियां रखी हैं, इसको आप सुधारिए।